So let's start a new chapter, which we will talk about, where we'll talk about energy. So यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के बारे में और एनर्जी से कई सारी चीजों को रिलेट करेंगे as well as we will go for some things related to work done. हम लोग को यहाँ पे एक टर्म समझना है work done. So what is work done and how work done is related to energy, that we will understand. So in this chapter basically we will talk about energy, different units of energy, different kinds of energy, and things related to energy. As I said, most probably the work done. तो work done क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे. So let's start this chapter with these topics. So the very first thing which we have to understand here, that what is energy, how we can define energy. So in a very basic sense, or in a very basic way, in physics we can define energy is the capacity to do any kind of work. देखो हम लोग चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे वर्क डन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम लोग समझते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में. वर्क डन का एक कैलकुलेशन होता है जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वर्क डन कहते हैं. दैट इज नॉट द वर्क विच वी यूज टू डू. Work is something which is because of the application of force as well as related to the displacement made by the force. तो जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट पे किसी तरह की कोई डिस्प्लेसमेंट होती है तो वहां पे वर्क डन का कैलकुलेशन आता है. तो जब एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि इट इज द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क. सो द अमाउंट ऑफ वर्क विच वी यूज टू डू, the ability for which we are applying to do that work is called to be the energy. यानी जिस वजह से हम उस वर्क को कर पा रहे हैं that is called to be as energy. And energy used to be exist in numerous forms. हम लोग एनर्जी को कई सारे अलग अलग फॉर्म्स में देख सकते हैं. वेदर वी कॉल इट एज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, nuclear energy, and there are so many other various forms of energy. And whatever the form of energy we are talking about, they all are useful for us. We use them in different things. We use them in different ways to do our different kinds of work. So basically हम work के ऊपर जोर दे रहे हैं. तो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि work done क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं. तो डिफाइन करने के लिए एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू सम काइंड ऑफ वर्क. नाउ बिफोर वी मूव अहेड इन एनर्जी, आई विल जस्ट गो फॉर अ लिटिल बिट थिंग्स विद वर्क डन एंड देन आई विल कम टू द एनर्जी. तो अभी चूंकि हम एनर्जी को जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम वहां पे वर्क डन को लाए थे. तो वर्क डन के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हम लोग समझ जाते हैं और फिर हम लोग अलग अलग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में, उसके कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वर्क डन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वर्क डन. So see, when we do used to study in physics, then work is something which can be calculatable. As we know about the physical quantities, different kinds of physical quantities are there which we can calculate. So work is also a kind of physical quantity which we can calculate, which we can go for in a particular numeric form. तो जब अगर 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 कॉमन डे टू डे लाइफ में अगर देखते हैं तो वर्क डन के बेसिस पर कई सारे तरह के वर्क डन हो सकते हैं जो तुम लोग भी अपने घरों में करते हो. सो से एज फॉर एग्जांपल यू हैड गॉट सम होमवर्क टू डू एंड at your home you had done your homework and you had said that I had completed my work and now I will go for my games or I will just watch TV or something like that. So that work is not been considered as work done in the language of physics. जब हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में पढ़ते हैं या फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं तो वो होमवर्क करना वर्क डन नहीं होता है. या फिर अगर हम लोगों को बोला गया है कि पर्टिकुलरली किसी तरह के कुछ काम करने के लिए, सो दैट इज नॉट द वर्क डन टिल द टाइम we are not exerting force, and because of that force we are not causing some kind of displacement. So हम लोगों के हर किसी के लिए इन डे टू डे लाइफ में कई सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो वहां पर हम लोग कहते हैं वर्क डन. सो दैट इज बीन ओनली गिवन ओवर हियर. So when we go for the work done, then we understand in the language of physics
that if a force displaces an object then only work is said to be done। ना कि किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी को करने को हम लोग या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए, मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने को ही अगर हम कहेंगे कि वर्क डन है, तो ऐसा नहीं होता है। वर्क डन is something which requires two different quantities. One is force and the another is the distance traveled. So whenever the force been applied on an object and it causes a displacement in it, then we do use to say that work has been done। तो वर्क को होने के लिए ये दो चीजें होनी जरूरी है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू डू हैव अ बॉक्स, ठीक है, कहीं पे किसी फ्लोर पर या किसी जगह पर कोई एक बॉक्स रखी हुई है एंड यू नीड टू मूव दिस बॉक्स। तुमको इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस। तो तुमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। से एज फॉर एग्जांपल यू हैड एक्सर्टेड 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, and because of this force what you had done, you had made a displacement of this particular object from one point to another point। So you had just moved this object from this point to this point। So over here you can observe that the body had displaced here। So say as for example the body had displaced by 2 meters। So you had exerted a force of 10 Newton, due to which you had made the body to move by 2 meters. Then we can say that some work had been done over there। So as I just now said, work done is equals to the amount of force applied into the displacement made by the body। So over here it is 10 Newton into 2 meter, so it will be as 20 Newton meter। Okay, but one very important thing, एक बहुत important चीज है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड इन द मोमेंट ऑफ फोर्स आल्सो वी हैड गॉट द सेम यूनिट। जब हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने सेम यूनिट देखा था, न्यूटन मीटर वहां पर यूज किया जा रहा था, एंड वी हैड केप्ट इट एज न्यूटन मीटर ओनली। But over here it is little different। देखो जब मोमेंट के बारे में बात करते हैं ना, इट इज द टर्निंग इफेक्ट। मोमेंट को जब हम बता भी रहे थे तो हम बताए थे वो टर्निंग इफेक्ट होती है। तो वहां पर हम बताए थे कि किसी पिविटेड बॉडी पर अगर कहीं किसी एक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो जिस पॉइंट पर पिविट है उसके सराउंडिंग में जब वो घूमती है तो वहां पर हम लोगों के पास आ जाता है फोर्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the pivoted point where the force is exerting, और इसके प्रोडक्ट से निकलकर आता है moment of force, and that moment of force is something which is related to the turning effect। But over here we are not talking about the moment of force, so here the Newton meter will be converted to joule, because this is the calculation of work done। यहाँ पर किस चीज की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, वर्क डन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। और वर्क डन के बारे में जब हम लोग कहते हैं, सो वर्क डन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। हम लोग जितना एनर्जी लगाते हैं, हम लोग जितना एनर्जी अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पर हम लोगों को वहां पर वर्क डन एक्सपीरियंस होती है। जैसे अभी अभी हम एग्जांपल दे रहे थे, इस बॉक्स को तुमको पुश करना था तो तुमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो उसके वजह से तुम 2 मीटर उसको डिस्प्लेस कर पाए। Say as for example, if you had exerted 20 न्यूटन ऑफ फोर्स, अगर तुम यहाँ पे 20 न्यूटन के फोर्स को लगाते तो तुम इसको ज्यादा डिस्प्लेस कर पाते। Obviously you had displaced it more। So the energy which we are discussing, that is the capability or the capacity to do some kind of work, and when we say the work has been done or some work been done, then that is actually the product of the amount of force which had been applied on a body with the displacement made by the body in the direction of the force applied। तो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स लगाने की वजह से वो अगर बॉडी डिस्प्लेस होती है, वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमको वर्क डन दिखाएगा। और वो वर्क डन क्या दिखा रहा है, दैट इज एक्चुअली द एनर्जी कंज्यूम। हम वहां पर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जब एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू सम काइंड ऑफ वर्क।
Now, let's understand about the different units of energy. अलग अलग units कौन कौन से हैं एनर्जी जिसको हम लोग यूज करते हैं. तो जब हम लोग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल. सो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. बट else than SI unit, there are some other units also, such as the sum multiple of unit of SI unit, that is CGS unit, that is erg. ठीक है, तो देखना याद रखना कि जो SI यूनिट होती है एनर्जी की वो जूल है, और जो CGS यूनिट होती है यानी जो उसकी सब यूनिट होती है उसको हम लोग कहते हैं अर्ग. और ये अर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा यूनिट है जो कि तुम लोगों को आगे भी पढ़नी है. तो इसका छोटा सा रिलेशन है. जस्ट नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट 1 जूल ऑफ वर्क डन. तो 1 जूल ऑफ वर्क डन में हम क्या बता रहे थे, जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए जिस वजह से 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट अगर होती है तो 1 जूल को वहां पर हम लोग कह सकते हैं. अभी जब हम लोग यूनिट डिस्कस कर रहे थे तो वर्क डन में भी हम तुमको बता रहे थे कि जैसे 10 जूल तो 10 न्यूटन फोर्स वहां पर अप्लाई हुआ और इस वजह से 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होती है. तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बन जाएगा 20 न्यूटन मीटर, और वी कैन से इट एज 20 जूल. सो जूल इज द ऐसा यूनिट. और 1 जूल ऑफ एनर्जी और 1 जूल ऑफ वर्क डन can be said to be as when 1 Newton of force been applied to make a movement by 1 meter. अगर इसको हम लोग और स्पेसिफिकली देखें तो 1 न्यूटन को अगर हम चेंज करते हैं तो ये भी एक फॉर्मूला है. F is equals to ma, where m is the mass and a is the acceleration. So यहां पर अगर हम लोग देखते हैं इसको तो इसको लिख सकते हैं 1 kg. Just a minute. Over here we can write it as 1 kg into 1 meter per second square into 1 meter. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मास, कोई बॉडी जिसकी मास है 1 kg, उसको अगर हम मूव करवा रहे हैं विथ अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बेसिस पर, और वहां पर वो बॉडी मूव किया है 1 मीटर का, तो उसको भी हम 1 जूल ऑफ वर्क डन कहेंगे. सो दिस इज बी अ लिटिल बिट ट्रिकी फॉर यू ऑल, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू ऑल विद दीज थिंग्स. वी विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे, तब इसको और डिस्कस करेंगे. लेकिन हाँ, एक यूनिट जैसे कि अभी बता रहे थे जूल और अर्ग, इन दोनों का रिलेशन तुम लोगों को पता होना चाहिए. So 1 joule of work done or 1 joule of energy can be said to be as application of 1 Newton of force to make a movement of 1 meter. अब न्यूटन का जो सब यूनिट है यानी जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, वो है डाइन. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. एंड मीटर का अगर हम लोग सब यूनिट देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो सेंटीमीटर हो जाता है. सो दिस इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर एंड सॉरी 100 सेंटीमीटर. सो 100 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2. Now if I go for these two quantities together, then I can say it is 10 to the power 7 dyne centimeter, and this dyne centimeter is named to be as अर्ग. सो याद रखना 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. ये एक मल्टीपल है, एक यूनिट है जो कि याद रखने की जरूरत है. वैसे तो बहुत सारे अलग अलग रिलेशंस हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे करके हायर क्लासेस में समझेंगे, डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर इन दोनों के रिलेशन को, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के रिलेशन को तुम लोगों को याद रखने की जरूरत है. इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो एमकेएस सिस्टम में भी जो एनर्जी की यूनिट है वो जूल है. वैसे अलग अलग तरह के एनर्जी के क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी अलग अलग तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, हॉर्स पावर यूज होती है, किलोवाट आवर यूज होती है, कैलोरी यूज होती है. इस तरह के बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स यूज होती हैं. लेकिन उसमें से अगर देखते हैं तो हॉर्स पावर एक कॉमन सा यूनिट है जो कि अलग अलग मशीन्स में यूज होती है. किलोवाट आवर्स का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए. तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर लगी हुई है वो किलोवाट आवर के रूप में उसकी रीडिंग होती है. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. कैलोरी जो है वो स्पेसिफिकली हीट एनर्जी के लिए यूज होती है. इसी तरह से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूनिट्स की यूज हो जाती है. लेकिन तुम लोगों को जो मेन यूनिट याद रखना है
वो याद रखना है, इट्स SI यूनिट एंड इट्स CGS यूनिट, as well as the relation between the SI unit and CGS unit. Now, और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं एनर्जी के लिए, तो एनर्जी के से रिलेटेड काफी सारे लॉज हैं, काफी सारे थ्योरम्स हैं। अभी हम लोग उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं, सिर्फ बेसिक चीजों को समझेंगे। इसीलिए अभी हम थर्मोडायनामिक्स पे नहीं जाते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ हम लोगों को समझने की जरूरत है। सो थर्मोडायनामिक्स है क्या, बेसिकली छोटा सा एक हिंट देते हैं, जिसको फिर से हम लोग हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक्स असल में एक एनर्जी का रिलेशन है, और वो एनर्जी का रिलेशन आता है हीट के वजह से। बेसिकली हीट के वजह से वो आता है, क्योंकि ये माना जाता है कि एनर्जी का जो फॉर्मेशन हुआ था, या एनर्जी का जो प्रेजेंस है हम लोगों के चारों ओर, नॉट ओनली इन द अर्थ बट इन द स्पेस, इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द वेरी फर्स्ट फॉर्म एज हीट एनर्जी। तो हीट से ही बाकी सारे तरह के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी निकले हैं, और वहीं पर हीट से रिलेटेड काफी सारे तरह के लॉजिक्स मौजूद हैं। और उसी में से एक लॉजिक जो हम लोगों को समझना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड व्हाट दैट स्टेट्स that we can't neither create or destroy the energy. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम लोगों को डिस्कस करने की जरूरत होती है, where we do used to say that energy can't be created nor be destroyed. We are not able to create or we are not able to destroy energy. There is no any possibility that we human being can destroy some energy, or we can't say that we are producing, we are creating some energy. हम लोग एनर्जी को ना बना सकते हैं, ना ही हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द होल यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इट जस्ट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो एनर्जी अपने रूप को बदल सकती है। एनर्जी के कई सारे अलग अलग रूप हैं, और ये क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी की ये कैपेबिलिटी है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी वी डू यूज टू ऑब्जर्व एनर्जी इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। हम लोग एनर्जी के कई सारे अलग अलग फॉर्म्स देख सकते हैं, और बस ये इसी वजह से, क्योंकि एनर्जी जो है वो कैपेबल है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने में। तो एनर्जी को ना हम लोग बना सकते हैं, ना हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। That is the first law where we do use to understand that energy can't be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. Now, what are the different forms of energy? देखो, एनर्जी के कई सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन जब सबसे प्राइमरी फॉर्म्स में अगर हम लोग देखते हैं तो आती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे प्राइमरी फॉर्म अगर देखते हैं तो वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? In a very simple way, in a very simple form, you can say kinetic energy is the energy possessed by any body due to its motion. अगर मोशन के वजह से किसी बॉडी में कोई एनर्जी स्टोर्ड है, या कोई एनर्जी उसमें काउज हो रही है, या वहां पर किसी तरह की एनर्जी का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. So once again, the energy which is due to the motion of a body, when a body is in motion and it gains that energy, or it has, or it possesses that energy, then it is called to be as kinetic energy. Whereas when I talk about potential energy, that potential energy is the energy which is stored in it, which can be observed due to the either the change in shape and size, or change in its position, or due to its internal composition. अगर हम लोग किसी भी तरह के बॉडी में एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं जो उसके शेप एंड साइज के बदलने की वजह से हो रही है, या फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से हो रही है, या फिर उसके पोजीशन के चेंज होने की वजह से हो रही है, पोजीशन यानी पहले कहीं पे था और अभी कहीं पर हो गया, तो उस वजह से उसमें अगर कोई एनर्जी अगर ऑब्जर्व हो रही है तो, या उसके अंदर स्टोर्ड कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पर पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हैं. So when we do used to observe the different kinds of energy, then these are the two prominent forms of energy which we do use to observe. ये दो मेन तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग देखते हैं.
So one we do use to observe as kinetic energy, and another we do use to observe as potential energy. So once again, I'm repeating for the kinetic energy, it is the energy which is due to motion, whereas as potential energy is the energy which is due to either change in its shape and size or change in its position. So because of this, we do use to observe. Now let's see the different forms of energy regarding to this kinetic energy. So kinetic energy में सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं thermal energy. So what is thermal energy? Thermal energy is something related to heat energy. Now what is heat energy? Basically heat energy होती क्या चीज है? एक सिंपल फॉर्म में अगर हम बताते हैं तो heat energy is due to the kinetic movement of the particles of that specific matter. किसी भी मैटर की जो पार्टिकल्स होती हैं उसकी जो काइनेटिक मूवमेंट होती है, यानी जो पार्टिकल्स मूव कर रही होती हैं, वाइब्रेट कर रही होती हैं, उसके वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी. तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई एक यूटेंसिल है, उसको गैस बर्नर पे रखते हैं और उसको हम हीट अप करते हैं और फिर कुछ देर बाद अगर उसको टच करेंगे, so I will feel hot over there. So why it is so? It is because the heat which we had supplied in that body, it had made the particles to vibrate rapidly. And because of its vibration, we do use to observe, or we do use to say, oh, it is hot. But it is not like that. If we touch anything and we don't feel hot, then it is doesn't having heat. Each and every object has heat. हर ऑब्जेक्ट में हीट होती है. ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं कि उसमें हीट नहीं है. हाँ, अब ये बोल सकते हैं कि हीट की क्वांटिटी ज्यादा है या हीट की क्वांटिटी कम है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 2 ग्लास में वाटर है, ठीक है, एक में से एज फॉर एग्जांपल द वाटर्स टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस and in another one the water temperature is say as 30 degrees Celsius. So both are having heat. Both are having heat, both are having the thermal energy, but this 15 degree is having less thermal energy than to the 30 degree one. In this one, the particles are vibrating more rapidly than compared to the 15 degree one. So this is the thermal energy. इसको हम लोग कहते हैं thermal energy. The next one is the mechanical energy. Now what is mechanical energy? देखो mechanical energy को जब हम लोग derive करेंगे, समझेंगे, तो बहुत सारे जगहों पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे as the sum of the kinetic and potential energy. Mechanical energy is the sum of kinetic and potential energy. But we do use to also say in some specific manner, mechanical energy is the energy which causes due to the moving parts in a machine. So suppose for example you are riding your bicycle. So while you are riding your bicycle, you used to pedal it up. So while you are paddling, you do use to observe that the chain is going round and round and round. So over there, a mechanical energy is working, because of which you are able to make your cycle move over there. So that is due to the motion. So this energy again is due to motion. So as I said, that most of the energy which is related to the motion, they will come under the kinetic energy. So hence I just plotted it under the kinetic energy. So thermal energy is the kinetic movement of the particles. The mechanical energy is the movement of the parts of any kind of machine or any kind of tool, something like that. Next, electrical energy. Now electrical energy is also due to motion. Now what is moving over there? There is the movement of charges. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे वहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट काउज होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस. नाउ व्हाट आर चार्जेस? इन अ बेसिक वे यू कैन से द आयंस. हम लोगों ने केमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो हम लोग बात करते हैं फ्लो ऑफ नेगेटिव आयन. जो नेगेटिव चार्जेस होती हैं उसकी जब फ्लो होती है, उसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. सो अगेन मोशन इज देयर, एंड एज मोशन इज देयर इट विल कम अंडर द काइनेटिक एनर्जी. The next one which we have to understand, that is the magnetic energy. Now what is magnetic energy? Magnetic energy which we do use to observe that a magnet used to have. Magnet में जो energy होती है उसको हम लोग magnetic energy कहते हैं. Now when I say magnetic energy or magnetic wave energy, so over there also particles are very important.
मैग्नेट्स के अंदर जब हम लोग देखते हैं ना, तो मैग्नेट्स में वो स्पेसिफिक नेचर तभी आती है जब उनके पार्टिकल्स एक फिक्स पाथ पर अरेंज होते हैं। तो जब तक उनके पार्टिकल्स एक फिक्स पाथ पर अरेंज नहीं होंगे, तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। So for a magnet to work properly, the particles have to move in a particular pattern or in a particular path. So again, motion is there. So that is there. Now we will go for potential energy. So as I said, potential energy is the stored energy or the energy which is due to the change in its position or shape and size or its condition due to that one. So the very first thing which we will understand, that is the chemical energy. So the energy which is stored in the form of the chemical in any kind of component, such as very common example, the fuel which we use to burn to do different kinds of things. So over there, the chemical which is present over there undergoes a reaction, and it performs in a such a way that it gives out or it emits out or it releases out a large amount of energy. तो जब हम लोग बात करते हैं केमिकल एनर्जी के लिए, तो ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है जो किसी कंपोनेंट में स्टोर्ड होती है, किसी कंपोनेंट के अंदर मौजूद होती है, और ये एक सुटेबल कंडीशन में रिलीज होती है, और जिसके वजह से हम लोगों को एनर्जी का ऑब्टेनेशन होता है. So that is a kind of potential energy because it is the stored energy inside the component. Next is the elastic energy. So elastic energy is again the form of energy which we do use to observe due to the change in shape and size. So if you will take a elastic rubber band and you will stretch it, अगर एक rubber band लो और उसको stretch करो, so what will happen? Its shape and size had been changed. So when the shape and size had been changed, now if you will leave it from one corner, what will happen? It will bang to the other side. It will hit to the other side, and that hitting of the rubber band or that moving of the rubber band is called to be the elastic energy. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? Elastic energy कहते हैं. So once again, what is elastic energy? Elastic energy is the energy that is possessed by any body due to the change in shape and size of any body which is elastic in nature. Something which is elastic in nature, that will only show the elastic energy. Mostly all the objects are elastic, but some objects are more elastic and some are little bit rigid over there. So say as for example, if you will take a rubber ball and you will throw it on a wall, what will happen? It will just bounce back. तो एक rubber ball लो, दीवार पे मारो, वो क्या होगा? वो bounce back कर जाएगी. So as it is going to bounce back, you will do observe that it had bounced back due to the elastic nature of the rubber band. ठीक है, तो वो रबर बैंड, अब वहां पे रबर बैंड कहाँ पे आ गया? तो जो रबर की जो बॉल होती है, रबर की बॉल तो रबर से बनी हुई होती है. जब वो वॉल पर हिट होती है, ड्यू टू द रिजिडनेस ऑफ द वॉल, इट यूज्ड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉल. And as the ball used to change its shape, it again wants to regain or gets converted to its previous situation. And because of that, it releases the elastic energy. And due to this only, what happens? It used to bounce back. So it is coming under the potential energy. Next, we will understand for the nuclear energy. So what is nuclear energy? Again, it is the energy which is stored in a component. ये एक stored energy है. तो किसमें stored है? ये basically stored है in the atoms of any kind of आइसोएक्टिव रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स. जो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स होती हैं उसके एटॉम्स में ये मौजूद होती है. एंड दैट इज ड्यू टू द कंपोजिशन. उनके जो कंपोजिशंस होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एटॉम्स के डिस्कवरी में, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. दे आर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. So due to the high number of neutrons over there, we do use to observe that they can be reactive, and that we can say it is a kind of a chemical reaction. Not exactly a chemical reaction, but a kind of chemical reaction जिसके वजह से हम लोगों को ढेर सारा एनर्जी मिलता है. So again, it is a stored energy. It is the stored energy in the atoms of the matter. That's why it is called to be under the potential energy. So here we do use to understand about a nuclear energy. Next is the gravitational energy. Again, the gravitational energy is the stored energy in any matter. The gravitational energy is basically due to the mass of a body.
किसी भी बॉडी की जो मास होती है उसके वजह से ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है या ग्रेविटेशनल पावर होती है। तो ये तो हर बॉडी में स्टोर्ड होती है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, सबकी मास के वजह से उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हम लोग अपने सन को देखते हैं, जो हम लोग के सोलर सिस्टम में एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है, उसकी मास सबसे ज्यादा है, जिस वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है। And it is so strong that it had binded all the planets and all other heavenly bodies in our solar system. हम लोग के सोलर सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं वो सभी के सभी बंधी हुई हैं, सभी के सभी अपने पर्टिकुलर पाथ पर ऑर्बिट कर रही हैं, just because of the sun's gravitational force. And our earth also has a gravitational force, and because of that only we are able to stand. So we also do have a gravitational force, but our gravitational force is not so very strong because our mass is very, very, very small in front of the mass of the earth. Earth is huge for us, or its mass is very, very huge than compared to our mass, and because of that it has an enormous amount of gravitational force. And due to this, all the things are present in the earth. But it is not like that the earth is only having the maximum amount of gravitational force. The planets which are greater than earth, such as, for example, the bigger planet in our solar system is, the biggest planet in our solar system is Jupiter. Jupiter हम लोगों के planet का सबसे बड़ा planet है. So अपने हम लोग के सोलर सिस्टम में से, so उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज्यादा है among the planets. But all the heavenly bodies which are present in our solar system, उसमें सबसे ज्यादा मास जो है वो सन की है, इसलिए उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा हो जाती है। फिर हम लोग के सोलर सिस्टम के बाहर जितने भी दूसरे हेवनली बॉडीज हैं, उनकी मास के बेसिस पर उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहां पे मौजूद है। So these were the forms of energy. Now with this one, I had just placed the sound energy and light energy in a different column. So see, sound energy is partially from the kinetic energy and partially from the potential energy. ये partially अगर हम लोग देखते हैं तो kinetic energy के साथ भी आ जाती है और potential energy के साथ भी आ जाती है, क्योंकि इसमें जैसे for example अभी बता रहे थे elastic energy, तो किसी अगर elastic rubber band को अगर stretch करते हैं, so it has the elastic energy, and if I will just pull it down and leave it, so what will happen? It will vibrate. So while it is vibrating, it is going for motion as well as it is stretched up, and because of that it will cause sound. Hence it is coming under the potential as well as the kinetic energy. In the same way, when we talk about the light energy used to go for the kinetic energy as well as the potential energy. जब लाइट एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सो लाइट इज मेड अप ऑफ द फोटोन पार्टिकल्स. फोटोन पार्टिकल्स ट्रैवल करती है, किसी बॉडी से निकलकर वो ट्रैवल करती है, तो जब वो ट्रैवल कर रही है तो मोशन है, तो मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, और वो फोटोन पार्टिकल का खुद का अपना एक एनर्जी होता है, खुद की अपने मास के साथ एनर्जी होती है, जिसके वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी में भी आ जाती है. तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. So I had gone for a lot of the things and I was not asking for any doubt or any problem today, but you just go through till this point. यहाँ तक तुम पहले ध्यान से पढ़ लेना. Wherever you do find any doubt or any problem, you just ask me in next class. Okay? तो हम लोग की जो next class होगी उसमें हम problems या doubts यहाँ तक पूछेंगे. जो जो topic आज हम लोग discuss किए हैं, you just revise it and in our next class we will discuss that. Okay? So I will put this video in the YouTube also, so you can just go through that video, and wherever you do have any doubt, you just pause the video and see it. Okay? And wherever you get any doubt, you just clear it out in my next class. Okay? So with this one, I will end up today's class. So bye, good night.